Good morning, students. Today we are going to see accounting standard 16, that is a borrowing cost. In last session, we have seen that accounting for government grant. If you remember accounting standard 11, that is effects of changes in foreign exchange rate, we left with one part that is called as forward contract, and we are going to see it today only. So after this standard, immediately we are going to start with the forward contract. Accounting standard 16 is one of the very easy standards, so please take it seriously. Accounting standard is nothing. It's very simple standard. It's a borrowing cost. It is calculation of interest, and that interest has to be capitalized. Okay, normally interest is debited to profit and loss account, but here interest is going to capitalize. And why this is capitalized? Because when we borrow for one specific asset, that specific asset is called as qualifying asset. Qualifying asset is given in the accounting standard 16, defined as if asset takes a substantial time to get ready for its intended use, it is called as qualifying asset. जो asset बनने के लिए टाइम लेता है, जो asset बनने के लिए टाइम लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं substantial time means 1 year. Okay, तो जो asset, the asset which is taking more than 1 year to construct it or acquire it, remember in that case that interest has to be capitalized, and accounting standard 16 talks about it, that interest has to be capitalized. In case of capitalize means you will add it in the asset. Okay, so now you are aware about the difference between capital expenditure and revenue expenditure. Normally interest is revenue expenditure that we debited to profit and loss account, but we are going to add it in the qualifying asset, that is the asset value. But there are certain rules when to suspend it and when to seize it. It is called as, so accounting standard 16 has given you some guidance regarding interest cost, how to capitalize it. Okay, and suppose there is one more important point in this standard. If you have taken loan from the outside India, and in that case also how much interest has to be capitalized, something is given in the accounting standard 16. If you borrow something from foreign country, in that case how to capitalize your interest. So something in case of borrowing cost is also given in the accounting standard 16. Okay, so accounting standard 16 बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डरना नहीं आपको. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बोरो किया हुआ कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज किया जाएगा उसके बारे में एकदम सिंपल गाइडेंस है. सर 9 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 खत्म होने को. नेक्स्ट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एक लास्ट बचा हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू सी इट इन दी ऑन मंडे. ओके, सो मंडे को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 खत्म, सॉरी 10 खत्म करेंगे, और 10 के बाद मेरे साइड से पूरा सिलेबस 100% खत्म हो जाएगा. आई होप यू एंजॉय टिल नाउ. हमारा ये 95% सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है एंड वी लेफ्ट विद ओनली 5%. तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 का पेपर बहुत ही आसान होने वाला है, इतना याद रखिए. सो गुड मॉर्निंग टू अभिषेक पांडे जी, शिव संस्कारी जी, मितेश भाई पटेल, मोहम्मद असलम, अरुण शिंदे, मोहम्मद असलम, ज्ञानेश, हर्षित, ज्ञानेश ने वापस गुड मॉर्निंग भेजा है, अशोक जी, सपना, ज्योति, निकिता, यस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. खुशी, आज सबसे पहले खुशी ने गुड मॉर्निंग भेज दिया था. एंड आई होप रिमेनिंग स्टूडेंट्स अभी तक आए नहीं है, शायद से बाकी स्टूडेंट्स क्यों अब्दुल भाई अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. एंड यस प्रियंका जी, महिमा, यस बेटा गुड मॉर्निंग. एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यस लास्ट सेशन होगा. और पीयूष चौरसिया, चलो जल्दी से सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं. और जो डेडिकेशन से आपने फर्स्ट सेशन से लास्ट सेशन तक अटेंड किया है, फल तो आपको मिलने वाला है. सिर्फ रिविजन्स करते रहिए. डू योर रिविजन्स प्रॉपरली आफ्टर एवरी 6 days 7 days. प्लीज हैव योर प्लान्स फॉर पासिंग दिस एग्जाम्स. प्रॉपर स्टडी प्लान कीजिए और उसको फॉलो कीजिए. सिर्फ प्लानिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो वो भी करना. यस बेटा टीशा, अब्दुल एंड विमल कुमार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए आ जाइए, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सो ड्रॉ इंडेक्स. इंडेक्स को ड्रॉ कीजिए.
Write down index, serial number, page number, remarks, and category. So remember, accounting standard 16, it talks about when to interest capitalize. So if your asset is qualifying asset means what? If asset takes substantial time to get ready. Okay. If asset takes substantial time, that is normally 1 year, to get ready for its intended use, is called as qualifying asset. It qualifies for capitalization as per accounting standard 16. तो ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट बोला जाएगी. ये एसेट टाइम लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट विच टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. तो फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक कि आपको अभी क्वालिफाइंग एसेट में कोई भी डिफिकल्टी होगी. क्वालिफाइंग एसेट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में जो एसेट बनने के लिए टाइम लेती है. और टाइम मतलब कितना? बहुत सारा टाइम नहीं, अब 2 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल का टाइम दिया हुआ है. सो नॉर्मली 1 साल और कम ज्यादा चलेगा अकॉर्डिंग टू ऑडिटर सर्टिफिकेट. तो ऑडिटर अपना अपना सर्टिफिकेट या जो भी रहेगा, सॉरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट के हिसाब से ऑडिटर अपना यस बेटा ये क्वालिफाइंग है या नहीं क्वालिफाइंग है ये बता देगा. और यदि उसको नहीं बराबर लगा और कंपनी ने कुछ अलग ट्रीटमेंट किया रहेगा तो ऑडिटर अपने यस नोट्स टू अकाउंट्स में या सॉरी ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये चीजें डाल देगा. इतना याद रखिए. ओके, ऑडिटर्स अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये सब बता देगा ऐसा ऐसा है करके. ओके, so let's start. Question number 1. Raj and company has taken a loan of $20,000. कितने डॉलर का? $20,000 का. At the beginning of the financial year for a specified project at the rate of interest rate is 6%. तो बाहर का रेट कितना था? 6%. On the date of taking loan, the exchange rate between currency is 48 is equal to $1 and closing rate of financial year 50. The corresponding interest rate in India is 11% per annum. Now see beta, these calculations are really very easy. So just you have to focus. कि आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि भाई आउटसाइड इंडिया ये रेट कितना है और इन इंडिया ये रेट कितना है. तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर को. लिखो आंसर. आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट थ्रू आंसर. आंसर 1. interest and exchange difference. Interest and exchange difference in rupees. Serial number, particulars, computation, rupees. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1. Interest for the period. Interest for the period. See beta, $20,000 into 6%, and you are paying it after 1 year.
So after 1 year, your currency calculation, you're going to pay it interest after 1 year in dollar, and after 1 year, how much Indian rupees you have to pay. So you will consider rupees 50 for payment. Okay, red pen, after 1 year, rupees 50. So red pen, after 1 year, rupees 50. 20,000 into 6%, 6% into 50, normal pen, 60,000. Roman 2, exchange difference. How much exchange difference you are going to pay? $20,000. So you are paying, see, exchange difference is a difference between closing rate and opening rate. Red pen se. Closing rate and opening rate. So extra you are paying. So when you borrow dollars, at that time rate was 48. And now rate is 50. So you are paying 2 rupees extra principal amount के लिए. Exchange difference toward principal amount is you are paying 2 rupees extra. देखो, जब हमने लोन लिया था तब 50 रुपया रेट था क्या? नहीं, 48 रुपीज रेट था. पर जब मैं $20,000 रिटर्न मारेगा तब 50 रुपया रेट हो गया सर. सो देखो, इंटरेस्ट तो सस्ता गिरा पर मुझे एक्सचेंज डिफरेंस एक्स्ट्रा पे करना पड़ा. और एक्सचेंज डिफरेंस कितना पे करना पड़ा? यस, 50 minus 48, 2 rupees extra, मतलब 40,000. So Roman 3, total 1 plus 2. So foreign currency में I paid, yes, 1 lakh रुपया from my जेब. Okay, from my pocket, I paid 1 lakh rupee as per in dollars. Okay, interest and exchange difference, but we calculated it in rupees. We converted it into rupees. So we understood that we paid 1 lakh rupees interest cost plus exchange difference. But suppose now, second one, interest that would have resulted if loan is taken in India. Okay, सपोज इंडिया में लोन लिया रहता तो हमने कितना पे किया रहता? ओके, सो $20,000 हमने बोरो किए, बट उस टाइम पे एट दैट टाइम $20,000 वी बोरोड, बट व्हेन वी बोरोड दिस अमाउंट एट दैट टाइम, suppose I have not taken loan from outside India, I have taken loan from Indian currency. So here you will multiply it by 48, that is the loan date rate. Okay, loan date ka rate. So when I borrowed at that time, suppose if in India, if I borrow that amount, how much amount I borrowed? 20,000 into 48. So 9,60,000. And interest I have to pay. So this is Indian interest rate. Indian interest rate. Okay. So Indian interest rate is 11%. So how much interest I have to pay, beta? 1,05,600. Okay. So yes, beta. Here it is costly. And outside India, now you can see it is cheaper. कहां पे costly हो गया रहता? In India. And therefore, suppose now reverse is the situation, then क्या होता था? That I will tell you. So therefore, amount to be capitalized is rupees 1 lakh. So conclusion, therefore, amount to be capitalized is equal to rupees 1 lakh. So this is the answer.
If reverse is a situation, sir, if this calculation, assume if this calculation is rupees 90,000, assume in that case, Indian loan is a cheaper one. In that case, what happened? Indian loan is a cheaper loan. So 90,000 will be capitalized and 10,000 rupees ये आपका क्या हुआ रहता? 10,000 rupees ये आपका P&L में गया रहता, revenue expenditure. So amount to be capitalized is 90,000 in that case, and amount transferred to P&L is 10,000. तो 1 लाख में से 90,000 रुपया कैपिटलाइज होता था यदि इंडियन करेंसी का लोन ये सस्ता होता था. ओके, सो इंडिया में लिया रहता तो सस्ता होता था, तो उतना ही कैपिटलाइज किया रहता, बाकी का कैपिटलाइज नहीं किया होता. so, देखो एकदम सिंपल है. सो आपको क्या करना है? आपको पहले तो इंडिया में के लोन लिया तो कितना और बाहर से लोन लिया तो कितना, ये दोनों का डिफरेंस देखना है. यदि इंडिया करेंसी का महंगा होगा पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर देंगे सर, पूरा का पूरा कैपिटलाइज करेंगे. पर यदि यदि इंडिया में सस्ता होता, तो इंडिया में सस्ता तो बाहर क्यों जाना है आपको? तो अपने वहां के जो ऊपर का अमाउंट होता वो अपने P&L में डाला होता. सो आपको ये कंपेयर करना है. यू हैव टू कंपेयर विच, यस बेटा, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस इफ लोन इज टेकन आउटसाइड इंडिया. इफ लोन इज टेकन आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस यू विल कैलकुलेट टू कैलकुलेशंस, interest but exchange difference also. ओके, एवरीवन विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ना बेटा, इज लॉजिकल. अरे बाहर 6% से मिल रहा है और इंडिया में 11% से मिल रहा है, तो वेर यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट? यू विल अट्रैक्ट बेटा आउटसाइड इंडिया. एंड आउटसाइड इंडिया की करेंसी, यस यू विल डिमांड मोर, एंड यू विल डिमांड मोर तो एक्सचेंज डिफरेंस ऊपर जाएगा. अभी ये सब कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट इन द CA फाइनल, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में. सो सपोज नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, सपोज एज अ फाइनेंस मैनेजर इफ आई एम गेटिंग टू ऑप्शंस, वन इन इंडिया, इंडिया इज giving me 11% interest rate. Outside India, I am getting 6% interest rate. So as a finance manager, I will attract better towards outside India. Logical छे, एकदम logical. So outside India. So everyone will demand for better foreign currency interest loan. Okay. So foreign currency का interest loan everyone will demand. Foreign currency का बेटा demand high हो जाएगा. If foreign currency का demand high बेटा, तो interest rate क्या हो गया? Yes बेटा, foreign currency का interest rate बेटा सस्ता था, पर exchange difference पहले foreign currency से 48 रुपीज में आता था, अभी 50 रुपए में आएगा. सो 50 रुपीज नाउ इट्स अ स्पॉट रेट. ओके, एंड व्हेन you took that loan at that time rate was 48 rupees, and now beta everyone is asking for foreign currency, so exchange difference जो है वो बढ़ जाएगा. So there are beta two calculations if loan is taken from outside India, and if loan would have been taken from India, in that case you have to pay only interest, but that you have to compare with this 1 lakh and 1,05,600. If Indian currency loan is costlier, the whole amount will be capitalized, but if Indian currency loan is cheaper, only that amount is capitalized and extra amount is debited to P&L account. Okay, everyone is clear with this concept beta? Yes, tell me yes or no, जल्दी से समझ लो. देखो मतलब आपको कितने कैलकुलेशन करने हैं बेटा? मुझे 2 कैलकुलेशंस करने हैं. पहला कोई कैलकुलेशन क्या, चलो एक बार हिंदी में समझ लेते. पहला कैलकुलेशन क्या? बाहर से लोन लिया. अरे सर बाहर से लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बाहर के करेंसी में. 6% दिया सर, और 1 साल बाद देना है तो 50 रुपए के हिसाब से दिया सर. 6% इंटू 50 सर. उसके साथ साथ आपने क्या पे किया? उसके साथ साथ मैंने एक्सचेंज डिफरेंस पे किया. लोन लिया था उस दिन तो रेट 48 था, लोन जब रिपे किया तब रेट 50 था, तो 2 रुपए का एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ेगा. सो 1 + 2. सर समझ में आया? सर यही इंडिया में लोन लिया रहता, इंडिया में लोन लिया रहता तो मुझे उस टाइम पे 11% का इंटरेस्ट लगता था, पर लोन कब लिया रहता? 1 साल पहले. तो मैंने इधर 48 से मल्टीप्लाई करना है. देखो सर इधर 50 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 50, एंड हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 48. तो ये दोनों का डिफरेंस है, और दोनों के हिसाब से जो सस्ता होगा वो आपको कैपिटलाइज करना है. यदि बाहर की करेंसी का पूरा इंटरेस्ट सॉरी लोन कैपिटलाइज कर देंगे यदि वो सस्ता है तो, पर यदि इंडिया का सस्ता होगा तो उतना कैपिटलाइज करेंगे और ऊपर का पैसा P&L मध्ये डालेंगे. इतना याद रखो. यस, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूं आपको.
Yes. Should I give you one more example? You remember that one question is was pending बेटा 11 एस 11 में एक क्वेश्चन पेंडिंग હતો याद છે अरे एक था ना एस 11 में यस यू वांट टू ट्राई दिस शियान बिल्डर्स चलो आ एक ट्राई करो शान बिल्डर गलती से एस 16 का क्वेश्चन इधर आया था आई टोल्ड यू कि वी विल सॉल्व दिस इन एस 16 लाइबॉर मीन्स लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट plus 3% is a foreign currency interest. So here, London interbank offer rate is 1% plus 3%, means bahar ka loan is 4%. So outside India, you are getting at 4%. And in India, we are getting it at 10.5%, sir. Very simple question, sir. Outside India, it's 4%. In India, it is 10.5%. Chalo, chalo, solve it. Same question, only wordings are different. चलो ओवर क्या सी बेटा डॉलर 10 lakhs का रेट है
$10 lakhs into कितना परसेंट 4% into what is the future rate 56 and 62. So at the time of prepayment closing rate after 1 year 10 lakhs into 4% into 62 24 lakh 80,000 and 62 minus 56. So 10 lakhs into 6 rupees, 6 lakhs. Sorry, 60 lakhs. 60 lakhs. So this is 84 lakh 80,000. 84 lakh 80,000. 10 lakh dollars into 56 into 10.5%. $58 lakh 80,000. So this is cheaper. So 58 lakh 80,000 amount to be capitalized and amount transferred to P&L is equal to 8480 and 5880. So this is ELU 5 ACE 11. ELU 5 ACE 11. Yes, beta, write down this fatafat. Chalo, write down this answer.
अच्छा, यदि इंडिया में प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बोलता है समझ ले बेटा। S16 बोलता है कि भाई इंडिया में यदि आपको लोन सस्ता मिल रहा है तो आपको बाहर क्यों जाना है। पहली चीज, इंडिया में 58,80,000 में लोन मिल रहा है, आपने बाहर जाके 84,80,000 में पूरा एक्सचेंज डिफरेंस और ये पे किया टीशा, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने इतना बाहर के साइड पे पे करने से अच्छा है हम लोग इंडिया में ही ये पे कर देंगे, तो उतना ही कैपिटलाइज होगा जितना सस्ता है। ओके, तो बाकी का जो भी होगा वो ट्रांसफर टू पी एंड एल कैसे किया, ये 84,80,000 माइनस 58,80,000, इनका डिफरेंस हमने पी एंड एल में डाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उदय विश्वकर्मा जी। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। चलो, सो इंडेक्स में लिख लो, इंडेक्स में लिखो, लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देन amount to be capitalized, amount to be capitalized, lower of a फॉरेन लोन, फॉरेन लोन जिसमें हम लोग पे करेंगे इंटरेस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस, इंटरेस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस। सिर्फ यहां पे याद रखना इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग रेट होगा इंडियन लोन, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट, बट दिस इंटरेस्ट इज ऑन ओपनिंग रेट आपको लेना है। सो लास्ट डिविजन में इतना याद रखो, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग रेट इन केस ऑफ फॉरेन लोन, एंड इंडियन लोन होगा तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग रेट, कैटेगरी ए प्लस, ए प्लस कैटेगरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इधर लिख के रखना सीरियल नंबर में 5 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, 5 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इन सीरियल नंबर, इंडेक्स में सेम। क्वेश्चन नंबर 2, सुहाना लिमिटेड, यस, बेटा पेमेंट क्लोजिंग रेट से होगा, बट लोन जब लिया था वो ओपनिंग रेट से आएगा इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में आपने एक साल पहले लोन लिया रहता, एक साल पहले लोन लिया रहता तो ओपनिंग रेट लेना है इंडियन करेंसी में, एंड फॉरेन लोन लिया तो बेटा क्लोजिंग रेट लेना है। Question 2, Suhana Limited 12% secured debentures to be utilized as under construction of factory building,
Construction of factory building. But this is qualifying asset. Purchase of machinery, not qualifying asset. And working capital means current assets minus current liability. It is also not qualifying asset. In March 14, construction started. Construction completed March 14 May. And machinery was installed and ready for its intended use. Total interest of debentures. During the company had invested idle funds out of money raised from debentures in bank FD, which gives you 2 lakhs rupees का interest. कितना interest दिया बेटा? 2 lakhs rupees का. ठीक है. Show the treatment under of interest. ठीक है. लिखिए. Answer. Write down answer. Illustration 2. As per A16, borrowing cost that are directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying asset should be capitalized. Other borrowing costs are recognized as expenses. Other borrowing means other than qualifying asset. Next, after one line beta, amount to be capitalized is equal to interest on specific borrowings of qualifying asset QA minus income on temporary investment. Total interest on debentures, beta 11 lakhs minus 2 lakhs. So here interest on specific borrowings is 11 lakhs minus 2 lakhs is equal to 9 lakhs. Okay. So 2 lakhs is idle. So we won't consider that. This is given, na?
11 lakhs is interest on debenture. So 9 lakhs is amount on qualifying asset. Amount to be on qualifying asset. So 9 lakhs we have to divide. So this 9 lakhs divide over qualifying assets and non-qualifying assets. So we have to divide 9 lakhs rupees. Now, serial number, asset, nature, then amount to be capitalized, and amount transferred to P&L. So prepare columns beta of 6 lines. Serial number, asset, nature, amount to be qualifying, transferred to capitalize, or amount transferred to P&L. Serial number 1, factory building. Factory building. It's a qualifying asset. QA. Qualifying asset is QA. What is the amount? 9 lakhs into 40. What is total beta? 40 plus 35 plus 25. So total is 100. So 9 lakhs into 40 is only capitalized. 100. 9 lakhs is the total interest. But out of that, only capitalized is equal to 9 lakhs into 40 divided by 100. So answer is 360. Transfer to P&L dash. Second asset, machinery. Non-qualifying asset. Non-qualifying asset. It is ready to use. We will assume it is non-qualifying. So 9 lakhs into 35 upon 100. 3,15,000. Third one, working capital. Non-qualifying. 9 lakhs into 25 upon 100. 2,25,000. So total capitalize 3,60,000 and P&L में 5,40,000. Total is beta 9 lakhs. So 9 lakhs का breakup मिल गया 360 and 540. You got this concept? Easy है? Easy है क्या? क्वालिफाइंग एसेट जो 1 साल से ज्यादा लेता है एंड नॉन क्वालिफाइंग मतलब जो 1 साल से कम लेता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. So write down in index. Number 2, identify qualifying asset versus non-qualifying asset and charge or divide interest over assets. एंड एसेट्स में दो पार्ट्स होंगे, क्वालिफाइंग, नॉन क्वालिफाइंग. क्वालिफाइंग कैपिटलाइज होगा, नॉन क्वालिफाइंग P&L में जाएगा. इजी. थर्ड वन बेटा ये बी कैटेगरी क्वेश्चन था, बहुत इजी था ये. थर्ड क्वेश्चन. नाउ प्लीज A+ कैटेगरी क्वेश्चन है, ध्यान देना. मेसर्स आयुष लिमिटेड, अंडरस्टैंड, began construction of new building on 1st Jan 14. It obtained 3 lakhs का special loan 3 lakhs on 1st January at 12%. So 3 lakhs 1st January मतलब 12 months, 12 by 12. 1st Jan to 31st December. So 12 months. So what is the interest amount? 36,000. What is the interest amount? 36,000 on specific borrowing. Okay. And general borrowings are 6 lakhs into 11% and 11 lakhs into 13%. Okay. So this is called as non-specific loan. Remember, for general borrowings, we will use WACC concept, weighted average cost of capital. Try to understand these terms. Specific borrowing, specific interest rate, 12%. General borrowing, weighted average rate. Now, what is weighted average? Weighted average is nothing but, now see, 11 lakhs rupees is overweight, okay, as compared to 6 lakhs. So, simple average is 12%. Simple average is 12%, 11% and 13%. That is a simple average. And weighted average, beta weighted average, see, 6 lakhs का 11% कितना हुआ? 66,000 and 11 lakhs का 13% कितना हुआ? 1,43,000. So what is total? Total is 2,09,000. And what is total interest? 17 lakhs, 2,09,000 पे. So weighted average is 12.29%. कैसे निकाला? 2,09,000 divided by 17 lakhs. 2,09,000 divided by 17 lakhs. So weight is more towards 11 lakh. तो 13% के पास आंसर आएगा. Answer will be towards 13%. Simple average 12%. Weighted average 12.29%. Okay. If weight is more toward 13%, so your answer is more towards 13%. समझा क्या?
नाउ एक्सपेंडिचर दैट यू इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड जनवरी का 12 मंथ्स, जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल 9 months, April 9 months, July means 6 months, and December 1 month. So your expenditure are different for different months. So what are the expenditure throughout the year? This is 3 lakhs. This is 3,50,000 into 9 by 12. 262 500. 550 into 6 by 12. 275. And 150 divided by 12. 12,500. So total expenditure is 8,50,000. Out of 8,50,000, 3 lakhs is a specific borrowing. So बचा कितना? 5,50,000. So 3 lakhs के ऊपर कितना इंटरेस्ट था? 12%, 36,000. And 5,50,000 is a general borrowing. This is specific and this is general. So general borrowing is 5,50,000 into 12.29. So 65,000, 67,595. So total 1,03,595. So your answer is interest to be capitalized. Yes, beta, interest to be capitalized is 1,03,595. Now how to present the answer? Yes. So this is how you have to write this answer. So for specific borrowing, okay, specific borrowing 3 lakhs. So first utilize specific borrowing and then utilize general borrowing. And for general borrowing, which rate you have to apply? Yes, tell me it in the concept. In general borrowing, which rate, beta? Which rate? For general borrowing? Yes, what that rate is called as, बेटा? क्या बोलते वो रेट को? चलो जल्दी से बताओ वो रेट को क्या बोला जाएगा? Weighted average cost of capital. Very good, Nikita. Weighted average cost of capital. See the presentation. Yes, I will tell you presentation. चलो नहीं समझा तो और एक मौका. Very good. Weighted average cost of capital. Everyone answered weighted average for general borrowing and specific borrowing, nothing to worry. So बेटा C एक बार समझ लो, हिंदी में बताता हूं. 3 lakhs का स्पेसिफिक बोरिंग था तो 3 लाख का पूरा 36,000 रुपया कैपिटलाइज होने वाला है. एंड जनरल बोरिंग का रेट देखो वेटेड एवरेज से हमने निकाला. वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज जो होता है वो 12%, पर सिंपल एवरेज नहीं यूज करना है. 11 और 13 का डिफरेंस. ओके, 11 + 13 डिवाइड बाय 2 किया तो सिंपल एवरेज. एंड वेटेड एवरेज मतलब किसके टूवर्ड्स वेट झुका? यस बेटा, झुका 11 lakhs के टूवर्ड्स. 11 lakhs ज्यादा है ना बेटा, 13%. तो आंसर कितना आया हमारा वेटेड एवरेज में? 12.29. ओके, 13% के आप टूवर्ड्स आंसर ज्यादा झुकेगा. सो 12.29% मतलब अपना आंसर करेक्ट है. 12% से ज्यादा आया. ओके, सो वेटेड एवरेज कैपिटल किस लिए यूज करते हैं? जनरल बोरिंग. फिर हमने क्या निकाला?
इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर, अभी 3 लाख जनवरी में खर्चा किया था, तो 3 लाख मतलब पूरे 12 महीने का खर्चा है। 3,50,000 ये सिर्फ 9 महीने का खर्चा, मतलब 262,500 इक्विवेलेंट खर्चा, ये सिर्फ 12 महीने में मैंने कन्वर्ट किए। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड इंटू 12 मंथ्स। 3,50,000 9 महीने का, तो 12 महीने का 262,500। 5,50,000 6 महीने का, मतलब 2,75,000। 1,50,000 एक महीने के लिए कितना आएगा? 12,500। ओके, सो हमने ये खर्चे जो है वो 1 महीना, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने ऐसे कन्वर्ट किए, जिसको क्या बोलेंगे? एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। उसको क्या बोलेंगे? तो आपने क्या निकाला? एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। अभी उसमें से मैंने खर्चा किया 850, पर 850 का बेटा 3 लाख तो मैंने लोन लिया था स्पेसिफिकली 12% से, तो बचा कितना? 850 में से 550, तो 550 के लिए कौन सा रेट अप्लाई किया? 12.29%। ओके, सो जनरल बोरिंग फॉर रिमेनिंग बैलेंस, तो स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग। अभी मैं एक स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा करके देता हूं आपको। चलो एक स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा देता हूं। ओके, इंडेक्स में लिखो पहले। बोरोइंग्स और ऑफ टू टाइप्स, स्पेसिफिक, जनरल। बोरोइंग स्पेसिफिक को स्पेसिफिक रेट, रेट इज गिवन, एंड जनरल बोरोइंग यूज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So borrowings divided in two parts, and expenditure convert into average accumulated expenses, average accumulated expenses. Expenditure convert into average accumulated expenses. Divided in two parts, specific and general. Okay, average accumulated expenses. First utilize specific borrowings, and then utilize general borrowings. Okay, priority, specific, and then general. प्रेजेंटेशन, चलो अभी प्रेजेंटेशन करते हैं। इलू 3 प्रेजेंटेशन। टोटल एक्सपेंडिचर टू बी कैपिटलाइज्ड। सीरियल नंबर, राइट डाउन पर्टिकुलर्स, कॉम्प्यूटेशन बड़ा कॉलम, कॉम्प्यूटेशन बिगर, पर्टिकुलर स्मॉल, एंड कॉम्प्यूटेशन बिगर। रोमन 1, कॉस्ट ऑफ प्लांट, 300 प्लस 350 प्लस 550 प्लस 150, 300 या 3 lakhs लिखो, पूरा लिखो, 3 lakhs प्लस 3,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 150, 150। यस, 13,50,000।
Roman 2, interest to be capitalized. Working note 1. Roman 3, total expenses to be capitalized. Total expenses 1 plus 2. Working note 1. Interest to be capitalized. Interest to be capitalized. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1, on specific borrowings. One lakh into 10%. Sorry. Specific borrowings कितला होतो? 12% on 3 lakhs. Sorry. 3 lakhs into 12%. 36,000. On general borrowings, average accumulated expenses, वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट करेंगे इनटू वैक वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट करेंगे. सो ऑन जनरल बोरिंग्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? एवरेज accumulated expenses into weighted average cost of capital. Amount of interest to be capitalized. 1 plus 2. 1 plus 2. So on specific borrowings and on general borrowings. So specific borrowings we are aware. General borrowings, how to calculate? Average accumulated expenses into weighted average cost of capital. Very good. So working note 2, average accumulated expenses. Average accumulated expenses. Month, amount, equivalent months up to 31st December and last में average accumulated expenses. Month बेटा Jan, April, July, December. 3 lakhs, 3,50,000, 5,50,000 and 1,50,000. 12 by 12, 9 by 12, 6 by 12, 1 by 12, 3 lakhs, 3,50,000 into 9 by 12, 262,500, 2,75,000, 12,500, 8,50,000, 8,50,000. Very good. Specific 3 lakhs. General 5,50,000.
So multiplied by here 5,50,000 into, yes, rate working note 3. So 5,50,000 ऊपर लिख दिया, into rate is working note 3. Yes, anything difficult beta till now? मिस ज्योति इज आस्किंग पुणे में ठंड नहीं है क्या? नहीं है बेटा, ठंड नहीं है, बहुत गर्मी है उल्टा। पुणे में बहुत ही गर्मी है, और मैं तो पहाड़ी पे रहता हूँ पुणे में, थोड़ा आउटसाइड पुणे। वर्किंग नोट 3, interest rate on general borrowings. Interest rate on general borrowings. Month, amount, equivalent months up to 31st December, equivalent loan, interest rate, and interest amount. Now this is a beta, if loan dates are also different, this is a standard pro forma. So लोन कब लिया था आपने? जैन में लिया ना, वी विल एज्यूम जैन महीने में ही दोनों भी। अमाउंट इज 6 lakhs and 11 lakhs, 12 by 12, 12 by 12, 611 interest rate. So this is a standard pro forma abhi for every question. If even interest dates are different, okay, loan dates are different, still use the same pro forma. And interest amount, $66,000. Yes, beta, 66,000 and 1,43,000. 2,09,000. So weighted average cost of capital. Okay, so this is 17 lakhs. 2,09,000 divided by 17 lakhs, 12.29%. So this is 67,618 plus 36,000, 1,03,618, and 1,03,618 plus 13,50,000, 14,53,618. So entry will be building account debit to bank. Entry, building account debit to bank account, 14,53,618
14,53,618. बेटा इंडेक्स में कॉलम्स लिख के रखिए, मीन्स रिवीजन के लिए. सो इंडेक्स में आ जाओ एंड कॉलम्स लिखो. कॉलम्स ओनली नेम्स, एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस, एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस, कॉलम्स इंडेक्स में मंथ, अमाउंट, इक्विवेलेंट मंथ्स अप टू ईयर एंड and accumulated expense. And second one for interest rate on general borrowing. Interest rate on general borrowings, month, amount, equivalent months up to year end. So same. Then here equivalent loan, then interest rate, and then interest amount. ए प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन था ये. ए प्लस कैटेगरी. इजी छे, डिफिकल्ट छे? Should I give you one more question? 6 नंबर कर लीजिए. 6 नंबर. 6 नंबर कर लीजिए. Should I give you time or? Yes बेटा. 6 नंबर का क्वेश्चन. सिक्स नंबर बेटा, प्लीज डू इट इन दी फॉर्मेट. फॉर्मेट में कीजिए. सेम क्वेश्चन है. यस, सेम क्वेश्चन. 8 मिनट्स. 8 मिनट्स देता हूं आपको. 8 मिनट्स.
उदय विश्वकर्मा, फास्ट आंसर आपने दिया है। सबसे तेज एंड करेक्ट ऑल्सो। ₹3 lakhs, 2,40,000, 4 lakhs and 360, 300 plus 240 plus 400 plus 360, 13 लाख। स्पेसिफिक बोरिंग कितना था? 2 lakhs into 8%, 16,000। एक अप्रैल, 31 मई, 1 अगस्त, 31 दिसंबर। फोर्टी, 4 लाख, अप टू 31 मार्च, 12, 10, 2 lakhs, 2,66,667, 90। We will assume on 1 April, 4 लाख, 5 लाख. We will assume on the same date, and 3 lakhs, $138 divided by 12,
11.5, 11.5%, 656, 667 into 11.5, 75,517 plus 16,000, 91,517. So building to bank 91,517 na 13 lakh 91,517, 13 lakh 91,517. थर्टीन लाख 91,517. 10 मिनट जाएंगे आपके एग्जाम में. ज्ञानेश गलत है बेटा. You can take a screenshot if you want. थर्टीन लाख 91,517. बाकी के स्टूडेंट्स क्यों आंसर नहीं दे रहे? Working note 1. Then average accumulated expenses. You can take screenshots. But please do it today itself. Working note 3. And entry. Eight number question is your homework. 8 number question. Over beta. Same answer beta abhi. Yes, everyone got the same answer. 5 marks हट क्या बेटा? May 22 में आया था तो माइट बी अभी May 23 में आने के मुझे लग रहा है कि May 23 में सेम आएगा. यही एक ऐसे आपके साथ खेल सकते हैं इसमें, बाकी कुछ दम नहीं है. इंडेक्स 6. Here you can write 3, 6, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8.
368 and beta 5 number and 7 number, 5 and 7, 5 and 7 is like 2. So 2, 5 and 7. Chalo, 2, 5 and 7 are similar. 2, 5, 7 are similar. So first question, so there are 3 categories. Okay. Then beta fourth number is suspension theory. सस्पेंशन की थ्योरी है, ए कैटेगरी. सस्पेंशन मीन्स स्टॉप, परमानेंट नहीं, टेम्पररी. टेम्पररी स्टॉप करना. लिख के देता हूं आंसर, फोर्थ का आंसर लिख के देता हूं, बट बिफोर दैट यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5. चलो 5 नंबर का क्वेश्चन करो, कंप्लीट इट. चलो 5 नंबर का क्वेश्चन, डू इट. इट्स सिमिलर टू सेकंड नंबर. 5 नंबर का कंप्लीट करो. 5 नंबर का कंप्लीट करो फास्ट. This is qualifying asset. Non-qualifying, non-qualifying, purchase non-qualifying, advance non-qualifying, and this is also non-qualifying asset. So 2 से 7 all are non-qualifying. Interest is 1.6 and total, तो 1.6 को डिवाइड करना है, एंड टोटल कितना है 50 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, so this is 64. So divide by 64. So here divide by 64 into 50 is equal 1.25. 1.25 क्वालिफाइंग में आएगा 0.15, 0.1, 0.025, 0.025, and 2 is equal to 0.05. 0.05 plus 0.05 plus 0.1 plus 0.15, 0.35, and this is 1.6. Over. पांच नंबर का आंसर
इजी है क्या? यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड बेटा, रफ में कर लो. 64 is total and 1.6 divided by 64 into 50. I will give you shortcut. देखो समझ लो. Understand it. Shortcut on calci I will tell you. See, now 1.6 is a loan amount. बराबर है? That we have to divide by 50 into or 64. Second one बेटा 1.6 into और कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है. Then 1.6 into 6 upon 64. So 1.6 and 64 are common. So take on calci 1.6 divided by 64. So you are getting 0.025. What you are getting? 0.025. First time into 50 is equal to. So you will get 1.25. First time क्या करना है आपको? देखो 1.6 डिवाइड बाय डायरेक्ट इंटरेस्ट स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 64 इज कॉमन. ओके, then first time into 50 is equal to. So you are getting 1.25 and then just multiply 6 is equal to, then 4 is equal to. बस उतना आपको करना है. Okay. So shortcut of calci, you can write over there. Shortcut of calci. Shortcut on calci. 1.6 is interest, total and individual. Individual आपको ऐसे करते जाना है. First time into, then first time into करना, then just 6 is equal to 4 is equal to 1 is equal to 1 is equal to and 2 is equal to. So this is a shortcut of calci. इंटरेस्ट ऊपर आएगा, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय 64. एंड डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको. नाउ यू डू दी कैलसी शॉर्टकट. टर्म लोन 320 lakhs. Okay. So what is the total is also given. 240 plus 30 plus 24 plus 12 plus 8 plus 6. So total is 320. And what is interest amount? 40 lakhs. Construction of shared qualifying asset, non-qualifying, non-qualifying working capital, non-qualifying vehicle, non-qualifying and technical know-how, non-qualifying. डिवाइड कीजिए क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग. 40 lakhs इज अ लोन अमाउंट. चलो करो फटाफट. यूज शॉर्टकट. ऐसे क्वेश्चन आए तो बेटा सिक्सर ही मारोगे आप लोग. टेल मी अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग. इंटरेस्ट क्वालिफाइंग का और नॉन क्वालिफाइंग का.
वेरी गुड टीशा। अब्दुल ने क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग छोड़ के सब आंसर्स दिए। अरे बेटा कैपिटलाइज कितना होगा, पी एंड एल में कितना जाएगा, क्वालिफाइंग का कैपिटलाइज होगा, नॉन क्वालिफाइंग का पी एंड एल में जाएगा। वेरी गुड बेटा उदय, वेरी गुड। देखो क्या करना है, शॉर्टकट और कैलसी। 40 डिवाइड बाय 320 कैलसी पे लेना है, इंटू 240 इज इक्वल टू, देन 30 is equal to, then 24 is equal to, then 12 is equal to, then 8 is equal to, and 6 is equal to. सो क्वालिफाइंग का कितना आया आपका 30 कैलसी पे, 40 डिवाइड बाय 320 इंटू 240 इज इक्वल टू 30 आया, देन 30 इज इक्वल टू 3.75, देन 24 इज इक्वल टू 3, 12 इज इक्वल टू 1.5, 8 इज इक्वल टू 1, 6 is equal to 0.75. So 0.75 plus 1 plus 1.5 plus 3 plus 3.75, 10, 30 and 10, 40 का बाइफर्केशन। इसके तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे ना, 5 मार्क्स, और यू नो दिस कॉलम्स। आलोक कमेंट्स आ रहे तेरे, वेरी गुड बेटा। 7th over बेटा, नाउ सस्पेंशन। यू डोंट वांट ब्रेक ना बेटा, अभी हो गया खत्म। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 11 दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई विल लीव यू 9:20 9:25 को, सो विदाउट टेकिंग ब्रेक, इफ यू ऑल आर रेडी, otherwise we will take a break. If you are enjoying, then don't take a break beta. Yes, need break beta, need break. Only 2 questions are remaining. Which one is best beta? कौन सा सबसे आसान था, 11, 12 या 16? यस बेटा 9 लेता हूं मैं, डोंट वरी। अब्दुल डोंट वरी बेटा, 9 नंबर लेने वाला हूं। सबसे इजीएस्ट कौन सा था? यस ज्योति। आलोक बोल रहा है सब इजी है। मितेश भाई एंजॉय करे छे। नैनिश 16 इजी एंड नॉट लेंदी। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंशन। चलो बेटा, सस्पेंशन मतलब टेम्पररी डिले। इन सिंपल लैंग्वेज, when there is a temporary delay in construction, you will transfer it to P and L. किधर ट्रांसफर करेंगे? P and L में। Whatever interest is transferred to P and L if there is a temporary delay. Okay, it is called as suspension. Now how to write the answer? चलो write down. Question 4.
व्हेन टेम्पररी डिले बेटा all activities, underline all activities necessary to prepare QA means qualifying asset for its intended use or sale are in progress. Are in progress, underline. Then capitalization should continue. In period in which active development is in progress. So all activities are in progress. So capitalization is continued. Okay? Capitalization, underline, continue. Second one. सिर्फ नाउ आर इन प्रोग्रेस के बदले में ये जगह पे सेम आएगा, सेम, सिर्फ आर इन प्रोग्रेस के बदले में आर इंटरप्टेड, आर इंटरप्टेड. सो कंटिन्यू के बदले में कैपिटलाइजेशन, कंटिन्यू के बदले में सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड. सो बेटा सेम आंसर होगा, सिर्फ आर इन प्रोग्रेस के बदले में रिप्लेस्ड बाय आर इंटरप्टेड एंड कैपिटलाइजेशन सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड. एंड तीसरा सेम, यहां पे भी सेम, सिर्फ आर इन प्रोग्रेस के बदले में आर कंप्लीटेड, आर कंप्लीटेड. तो कैपिटलाइजेशन शुड सीज्ड. सो योर कैपिटलाइजेशन शुड स्टॉप. सीज मतलब वहां पे स्टॉप हो जाएगा. इंटरप्टेड होगा तो सस्पेंड होगा, और कंप्लीट हुआ तो कैपिटलाइजेशन को बंद कर देना. सो यही आंसर लिखना है. ओनली आई हैव गिवन यू लास्ट डे रिवीजन नोट्स. बाकी सेम लिखना है, सेम यू हैव टू राइट. जो ऊपर है वही यू हैव टू राइट इट इन टू. सिर्फ आर इन प्रोग्रेस रिप्लेस बाय आर इंटरप्टेड एंड कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू के बदले में सस्पेंडेड, एंड लास्ट में आर कंप्लीटेड एंड शुड सीज. ओके, सो थ्योरी है, याद रखना. आई हैव गिवन यू शॉर्टकट्स. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9. एज आई टोल्ड यू कि आज S16 कंप्लीट होके S11 that part is left. Actually that part might be covered in the last session only, but due to that lecture दिया था ना 15 मिनट का मोटिवेशनल लेक्चर, so that's why बेटा थोड़ा सा डिले हो गया. चलो कोई बात नहीं.
Now only one standard is remaining, that is a property, plant and equipment. 97% syllabus is getting over. Now we left with last session and I'm going to miss you after that. So question number, only S10 PPE is left. Yes. Temporary delay, okay. Chalo, last question. Let's read it. बेटा एफएम में कहाँ लेता हूँ? इधर ICI में नहीं लेता ना बेटा, मैं दिल्ली में। एफएम में पुणे में लेता हूँ। ज्ञानेश भाऊ, प्लीज गिव फीडबैक्स बेटा, फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिस्टमेटिकली बैच हुआ है हमारा, मींस ऑल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। मुझे तो बहुत इस बार रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है कि यू विल डू योर बेस्ट, और एक्सपेक्टेड है कि 70 प्लस जाएंगे बच्चे। एंड प्लीज थोड़ा दिमाग लगाओ, बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट सिमिलर, बट यू at that time, if your concepts are clear, you can easily opt these questions. So beta, please try to cover 100% paper. Don't keep any chapter in option. First thing, not a single chapter in option. According to me, beta Abdul, this is the best batch. Why? Why? Because this is a combination batch. Suppose if ICE is giving me more than 70 lectures, तो कोई बात ही नहीं है. 70 sessions, okay. But problem is that we are getting very less time, 38 to 40 sessions, and in that we have to cover whole syllabus is not possible. But this time you cooperate, and yes, we covered past examination questions also in this batch. So beta, that's why I'm very happy with this batch, क्योंकि result oriented batch था. Okay. चलिए. A company incorporated in June 2017 has set up factory within a period of 8 months with borrowed funds. The construction period of the asset has reduced drastically due to usage of technical innovations by the company. Whether interest on borrowings for the period prior to date of setting up of the factory should be capitalized, although it has taken less than 12 months. Yes, because your expectation is more than 12 months. Now it's okay that you finish with it in 8 months. Okay. So 8 months का capitalize होगा and 4 months का P&L में जाएगा. 8 months का भी you will consider it as qualifying asset. Okay. So how to write the answer? Say write down 9 number. Qualifying asset, QA means
asset takes substantial time to get ready for its intended use. UM means asset takes substantial time to get ready for its intended use. Substantial time, next dash. Substantial time constitutes time depending upon facts and circumstances of each case. Full stop. Normally, 12 months is considered as substantial time. As substantial time. Shorter or longer period can be justified. Can be justified. Under present situation, next paragraph, dash, under present situation, "12 months period is benchmark and not yardstick." Is a benchmark but not yardstick. Remember ये लाइन आने दो. Conclusion. Eight months is also considered for qualifying asset. Eight months is also considered for qualifying asset. It's not like 12 months. It's a benchmark, but not yardstick. Okay? तो benchmark है, पर एग्जैक्ट ऐसे 12 ही महीने ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते. So this is the last answer. ओके ठीक है, 4 मार्क के लिए आया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख के दिए. Jyoti, best of luck for your BCom exam. Your sessions are amazing, but I am unable to attend last session due to BCom exam. It's okay, beta. But finish your syllabus, not only for my subject. बेटा कॉस्टिंग एफएम तो एडवांस ये तो इजी है. यदि आप मेरे से लेते हो तो मैं बोलूंगा नहीं कि मेरे से लो, पर यू विल फाइंड इट इजी वंस ट्यूनिंग इज मैच्ड. एंड डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड ऑडिट आर थ्योरी सब्जेक्ट. एएसएसएम इज आल्सो थ्योरी. और टैक्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा विथ लॉजिक. सेम टेक्निक यू कैन अप्लाई. इंडेक्स, सीरियल नंबर, पेज नंबर, कैटेगरी. आई डोंट नो अबाउट अदर फैकल्टीज, बट yes, try to understand. Once you got the technique of any subject और एक आध फैकल्टी आपको अच्छी लगती है तो फॉलो हिज टेक्निक फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. थ्योरी का थोड़ा अलग है. थ्योरी में हम लोग कैटेगरीज वगैरह नहीं कर सकते,
बट प्रैक्टिकल टॉपिक्स में ये कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। इंडेक्स वगैरह ये क्या है, ये लास्ट रिवीजन नोट्स है बस, बाकी कुछ नहीं है। So we have finished with this S16. आलोक बोल रहा है सर फीडबैक में लिख दिया है कि आप ही को दे दे कॉस्टिंग और एडवांस अकाउंट्स। ठीक है बेटा, बहुत हो जाएगा इतना तो दिन भर मैं आप ही के साथ दिखूंगा नहीं तो। ठीक है ठीक है। चलिए, सो लास्ट पार्ट, S11 का लास्ट पार्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट्स वेरी इजी बेटा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलो, हैप्पी विथ S16, S12? वही तो प्रियंका, वो दोनों सेशन में मैं ही दिखूंगा आपको। ओके, जोक्स अपार्ट। चलो बेटा, S13 उदय विश्वकर्मा, वी हैव दैट चैप्टर ना S13 पे, इन्वेस्टमेंट चैप्टर। सो व्हाई टू टेक इट अगेन? तो उदय, अपने को S13 इन्वेस्टमेंट चैप्टर ही है बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो? चलो, S11 का पार्ट 2, 2 पेजेस छोड़े थे आपने, पार्ट 2। पार्ट 2 बेटा, पार्ट 2। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। See beta, what is forward contract? Forward contract is nothing but if you are not sure about future rate. Okay, suppose if I think that dollar rate would increase by, okay, in future it gets increased by rupees. So suppose now current dollar rate is 70, and I am thinking after 3 months I'm going to enter into one transaction where I think the dollar will reach up to 78 after 3 months. So today's spot rate, spot means current rate, is 70. And might be my thinking is that after 3 months, rate will reach to 78. So for hedging purpose, hedging means minimize my risk. So what is the word? Hedging. Hedging means minimize my risk. After 3 months, I'm thinking that rate will go up to 78. Oh, so I entered with you that give me $1 at rupees 75. Your thinking is that rate will reach up to 73. मेरा thinking क्या है? 78. But obvious, 78 is my thinking. So I am entering into forward contract of 75. Okay. So I am thinking that I will save rupees 3 in future. But at the same time,
you are thinking, because why you are entering with me in transaction, because you are thinking is that ki rate will reach up to 74. Okay, rate 74 पे जाएगा. So your thinking is that you will get 1 rupee. You will get 1 rupee because you are entering with me in at 75. We both are not aware about the future. Okay, but everyone thinking is different. And to secure myself, if I am entering into a forward contract, it is called as hedging. Okay, so first you have to see whether this is hedge contract. Now, what is hedging? That I am taking one plant and machinery from Germany, and I want to pay it in dollars. So in that case, there is one transaction. There is one proper transaction that you bought one plant and machinery, and then you are paying it in the form of dollar. So you have ideally one contract with you, that plant and machinery. But some people, some investors, they are doing it for speculation purpose. So identify your transaction first. Either it's for hedging or for speculation. If it is for hedging, then S11 has separate treatment. And if it is for speculation, it has a separate treatment. Okay. Now I will tell you what is exactly the treatment. Okay. So एक बार हिंदी में समझ लीजिए. देखो भाई, कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करता है? जब मुझे लग रहा है कि $1 ये 75 रुपीज का है, सॉरी अभी 70 रुपीज का है, और मुझे लगता है कि भाई ये 78 में चला जाएगा, ये डॉलर चला जाएगा 78 में 3 महीने बाद. मैं डर गया, इसीलिए मैं एक ट्रांजैक्शन में एंटर किया. मैंने बोला ये भाई 78 तक नहीं जाएगा, मैं 3 महीने के बाद तेरे से 75 में लूंगा. तुम्हारे को मैं यही बोला कि तुम्हें यही बताया मैंने कि मैं तुम्हारे से ये डॉलर कितने में लूंगा, 78 रुपीज, सॉरी 75. तो इसको मैं बोलेगा फॉरवर्ड रेट. इसको क्या मैं बोलता हूं? फॉरवर्ड रेट. मेरा मन बोल रहा है डॉलर जाएगा 78, तो मैं बोलेगा मैं 78 गया तो भाई 3 रुपया तो मेरा नफा हो गया, मैं तो प्रॉफिट में है 3 रुपया. और वही सपोज आप क्यों एंटर हुए? क्योंकि आपका मन बोल रहा है भाई 70, अभी 70 है, ज्यादा से ज्यादा 74 पे चला जाएगा, चलो सर से 1 रुपया तो कमा ही लेंगे, हमें 75 मिलेगा और मैं बाहर से 74 में लूंगा, सर को 75 में बेचूंगा, 1 रुपए का बल्ले बल्ले. ओके, सो यूर थिंकिंग इज डिफरेंट. यूर थिंकिंग इज 74, मेरा थिंकिंग है 78, और हम दोनों आए 75 पे. ओके, सो फॉरवर्ड रेट में हम लोग एंटर किए 75 में. ओके, अभी उधर के टाइम पे क्या होगा ये भगवान भरोसे, 3 महीने के बाद क्या होगा अपने को पता नहीं, मुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं. तो यहाँ पे दोनों को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों किया? बिकॉज दोनों को रेट का भरोसा नहीं है 3 महीने के बाद क्या होगा. अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के 2 तरीके हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कर रहे हो ये देखना चाहिए. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो ये देखना चाहिए. कि यदि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये आप हेजिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, सर हेजिंग मतलब आप आपकी रिस्क मिनिमाइज कर रहे हो. आप कुछ भी बेटा सट्टा नहीं खेल रहे हो, आप जुगाड़ नहीं खेल रहे हो. आपका मन बोला है कि सर प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिया और मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो 3 महीने के बाद जो पेमेंट करना है मैं एक हाथ से लूंगा, आपसे 75 से लूंगा और वो वहां पे पे करूंगा. मुझे फ्यूचर के साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे फ्यूचर रेट के साथ कोई लेना देना नहीं है. आज 70 रुपया है पर आज मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास 3 महीने के बाद पैसे आएंगे और मैं आपका पैसा दे दूंगा प्लांट एंड मशीनरी का. सर यहाँ पे मैंने कुछ भी सट्टा खेला नहीं है, खुद को सिक्योर किया सर, खुद को सिक्योर किया. उस टाइम पे रेट कुछ भी होने दो, मैं आपको 75 दूंगा. और एक है स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन में आज मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं,
आज का स्पॉट रेट मेरे लिए माइनस नहीं रखता है, पर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आइदर रेट 74 होगा या फ्यूचर में आइदर रेट 78 होगा। 74 हुआ तो मैं लॉस में चला जाएगा, मैं $1 75 में लूंगा, आपको 74 में बाहर से मिलेगा, तो यू विल बी इन प्रॉफिट ऑफ ₹1। और सपोज 78 हुआ तो मैं फायदे में रहूंगा, क्योंकि आपको मुझे 78 में लेके मुझे 75 में वो डॉलर बेचना है, तो आप 78 में वो डॉलर लोगे और मुझे बेचोगे 75 में, तो यू विल बी इन लॉस। तो यहाँ पे स्पेक्यूलेशन में तो प्रॉफिट में रहेगा, 78 हो गया तो स्पेक्यूलेशन में मैं सट्टा खेलेगा, स्पेक्यूलेशन में मैं सट्टा खेलेगा। तो इसका अकाउंटिंग कैसा है, ध्यान दीजिए, इसका अकाउंटिंग कैसा है, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट मतलब टूडेज रेट, और फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट। अभी हमारे एग्जाम्पल में फॉरवर्ड रेट आज का रेट कितना था, 70, एंड फॉरवर्ड रेट है 75। तो बेटा यहां पे मैं लॉस बुक करेगा ₹5। यहां पे मेरे लिए यस, फ्यूचर का स्पॉट रेट, फ्यूचर का स्पॉट रेट मेरे लिए माइनेज नहीं रखता है, फ्यूचर स्पॉट रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। करंट रेट 70, करंट स्पॉट रेट 70, एंड आफ्टर 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट 75 है, तो वहां पे 78 74 कुछ मायने नहीं रखेगा, 78 और 74 मायने नहीं रखेगा। एंड दिस लॉस हैज टू बी रिकॉग्नाइज ओवर अ पीरियड, over 3 months you have to recognize it, over 3 months you have to recognize it। समझे क्या, समझा, वेरी सिंपल, ओवर अ पीरियड यू विल रिकॉग्नाइज इट। सो टूडेज रेट एज्यूम करते हैं ये 1 जैन है और ये 31 मार्च है। सो 1 जैन और 31 मार्च, 1 जैन का स्पॉट रेट 70 एंड 31 मार्च का फॉरवर्ड रेट है बेटा। फ्यूचर 3 मंथ्स का स्पॉट रेट मायने नहीं रखेगा, 3 मंथ्स का स्पॉट रेट मायने नहीं रखेगा। सो लॉस ₹5 आई विल बुक इट ओवर 3 मंथ्स। ओके, 3 महीने में मैं ये स्पॉट रेट बुक करेगा। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन में स्पॉट रेट 1 जनवरी ₹70 इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पे डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस बुक होगा फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट कितना था, ₹75, एंड फ्यूचर का स्पॉट रेट मतलब 31 मार्च का स्पॉट रेट 78 और 74। 78 हुआ तो आई विल बी इन प्रॉफिट ऑफ ₹3। ओके, एंड 74 हुआ तो आई विल बी इन लॉस ऑफ ₹1। ये याद रखो, लॉस ऑफ ₹1, बिकॉज I will purchase from you at 75 and future rate is 78. So I will be in profit. मुझे तो 75 सस्ते में गिरा, पर तब 74 होगा तो मेरा लॉस होएगा, इतना याद रखो। I will be in loss. So बेटा spot rate is not important. यहाँ पे speculation में only forward rate is important. Only forward rate is important. Yes, clear with the concept? अरे clear with the concept? Hedging and speculation clear? आलोक, कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व आपको समझेगा नहीं अभी। हेजिंग रिजर्व समझने के लिए आपको S11 सॉरी इंड एस 30 31 32 ये जो है ना वो पढ़ने पड़ेंगे। सो बहुत मुश्किल है 119 करके, तो तब आपको समझ में आएगा। सो कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व एंड ऑल थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो नेक्स्ट, नाउ बेटा, यस, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते S11 के।
सो एक ही क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है. नाउ सी, स्टेम लिमिटेड परचेस अ प्लांट. Purchase a plant for US. So tell me, purchase a plant. So it is a speculation contract or hedging contract? Yes, beta. Tell me it in comment section. $30,000. 30 नवंबर, 30/11. अभी 30/11, 30 नवंबर से बीच में नवंबर हुआ ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. सो बेटा मई का रेट है 12, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, मई का रेट है. एंड बीच में आया 31 मार्च. ओके, अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट 62.5 है. सो 62.5 इज अ फॉरवर्ड 15, सॉरी, 62.15. एंड टूडेज स्पॉट रेट 60.75, 60.75 and 62.15. So loss ₹1.4. अभी इधर 11 से 3, 12, 1, 2, 3, 4 months, and here it is 2 months. So divide by 6 months into 4. So 0.93 loss here. Divided by 6 into 2, 0.46 का 47 का लॉस हियर. सो 0.93 फॉर 4 months and 0.47 फॉर 2 months. सो दिस इज अ लॉस पीरियड. सो 31 मार्च को कितना बुक करोगे? ₹0.93 इंटू $30,000. सो आंसर इज 28,000. 28,000 का लॉस आप लोग डिवाइड करोगे. $28,000, रुपीज 28,000 का लॉस. हेजिंग था. वेरी गुड बेटा, हेजिंग. कितना आया बेटा? 28,000. Okay. So how to write the answer, beta? Write down. Question 3. Loss to be recognized. Loss to be recognized in March 2014. Serial number, particulars, computation, rupees. Forward rate on forward rate given 60.75, 62.15, sorry. Spot rate given 60.75.
टोटल लॉस 1 minus 2 1.4. Loss up to 31st March, Roman 3 into 4 by 6. Point 9333. Total loss up to 31st March, $30,000 into Roman 4, 28,000. Easy है बेटा अभी. Easy. So question number 3 easy. Then after question 3 beta, do question 6. Now do question 6 beta. चलो question 6. Power track purchase a plant. Plant मतलब hedging. October 15 payable after 6 months. So payable after 6 months beta. Every question is of hedging. Speculation का question you will get it in study material. So watch previous sessions. So October, November, December, January, February, March, April. 30 April. Spot rate and forward rate. 31st March 16 तक कितना? 61.5 and 64.25. So 64.25 minus 61.5 minus 61.5. So total loss is 2.75. Now up to 31st March, 5 months over. 5 by 6. So 2 point, कैलसी पे वैसे ही रहने दो, 2.2917 और कैलसी पे जो अमाउंट है उसको इंटू 50,000 से मल्टीप्लाई करो. So your answer will be 114583. 114583. Very good बेटा अब्दुल. चलो लास्ट वन. Very good Priyanka. And this is question 6. बेटा you can write it in index. Question 3, 6 and अभी कौन सा बचा इसमें से? 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया है, 9 हो गया है. 10. Last question.
बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बाकी का आप कर लेना. 10 नंबर, नवंबर 18, वेटिंग फॉर योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन है. PPE means hedging. The amount was payable after 6 months. Forward contract for 5 months. 5 months का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. 62.5. इट्स अ फॉरवर्ड रेट 5 months. 1st January का स्पॉट रेट, 31st March का स्पॉट रेट टू कंफ्यूज अस. 31st March का स्पॉट रेट नो यूज ना बेटा, रिमेंबर. स्पॉट रेट इज ऑफ नो यूज 31st March का. रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस. टेल मी द आंसर. 5 months है, 6 months is to confuse us. रॉन्ग बेटा अब्दुल. फॉरवर्ड रेट गिवन, फॉरवर्ड रेट 62.5 and spot rate 60.75. So loss is 1.75. This is 3 by 5. 1.75 divided by 5 into 3. 1.05. And dollars 5 lakh. 5 lakhs into 1.05. Correct answer is, रुको थोड़ा सबर करो अब्दुल, सब आके भी एडे जैसा करोगे तो कैसे चलेगा. 5 months का ही है ना, 6 months क्यों लिया आपने. 5,25,000. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड देखो. करेक्ट आंसर इज 5,25,000. 10 नंबर IMP या 10 नंबर IMP. यस, इजी है. सो विल स्टॉप टुडे. यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है. I hope you enjoyed. Yes. So I have completed S11 ka part also, S16. So you have to revise, you have to watch my previous session of 16 and please if possible go for S10 के previous questions because S10 थोड़ा सा lengthy है but difficult नहीं है. So 14 questions we have to solve it on Monday. थोड़ा बड़ा topic है S16. Sorry, S10. So if possible, please watch previous sessions. Thank you. Bye bye. Good day. थैंक यू. बंद कर दीजिए.